Hi, in today's video, we are going to be practicing 5 pranayamas that you can practice every day to relieve stress, energize the body and let go of anxiety and worries. आज हम 5 ऐसा प्राणायाम करेंगे जिससे अपना शरीर मजबूत और एनर्जाइज होता है और मन शांत होता है. Before that, make sure to subscribe to this channel and press the bell icon. First, we'll do the yogic breathing. अभी हम दीर्घ प्राणायाम करेंगे. इसमें 2 parts हैं. The first part is as you inhale, you expand the tummy, and the second part is continue breathing in, expand the chest, and little bit at the end, expand the collarbone also. पहले हम श्वास लेते लेते पेट को फैलाएंगे और छाती को फैलाएंगे और हल्का सा collarbone को. Then as you exhale, you pull the tummy in and relax. श्वास छोड़ते छोड़ते नाभि को अंदर खींचिए. शुरू करते हैं. आंख बंद करिए. Let's close our eyes. Take your attention to your navel region. नाभि पर ध्यान रखिए. Slowly as you breathe in, start expanding your tummy. श्वास लेते लेते पेट को फैलाइए. And continue breathing in, expand your chest. और श्वास लेते लेते छाती को भी बड़ा करिए. Expand your collarbone. Keep expanding the whole body. And breathe out. Relax your chest. Pull the navel all the way in and empty your lungs. One more time. Breathe in. Expand the stomach. श्वास लेते लेते पेट को बड़ा करिए. श्वास लेते रहिए. छाती को बड़ा करिए. Continue breathing in. Expand your chest from the front, from the sides, from the top. Expand the collarbone. Expand the whole body. पूरा शरीर को फैलने दीजिए. And breathe out. Relax your chest and pull the navel in. श्वास छोड़िए. नाभि को अंदर कीजिए. Empty the lungs. If you also wish to, you can keep your right palm on the navel and left palm on the chest. हाथ को पेट और छाती के ऊपर रख सकते हैं. श्वास अंदर, पेट को फैलाएं. Inhale. Expand the tummy. Keep expanding, keep breathing in. Continue breathing in, expand your chest. Keep expanding. Lift your collarbone. And breathe out, relax your chest. And pull the navel all the way in. Feel the movement in your palms. श्वास छोड़ते छोड़ते नाभि को अंदर कीजिए. हाथ में महसूस करिए कैसा अपना शरीर बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है. One more time, breathe in, expand your tummy. Keep expanding the chest. And breathe out, relax your chest. Pull the navel in. And you may relax your hands. And slowly and gently you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. Now you can practice this from 5 rounds to 10 rounds according to the time availability. Alright. Now for the second pranayam, we'll learn the Bhastrika pranayam. Now people with high BP, heart issues or epilepsy issues, you do it gently or you may avoid doing this. Alright. Now how to do that? First is keep a smile on your face. अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे. जो मैंने कंडीशंस मेंशन किया, अगर वो कंडीशंस है तो हल्का करिए. कैसे करना है? पहले मुस्कान रखिए. Loose fist next to your shoulders. This is done with a little bit of force. You breathe in, take the hands up, open the fingers, and you breathe out. Drop the hands down, make a fist.
ऑलराइट, श्वास अंदर लेते लेते थोड़ा तेज़ी से हाथ को ऊपर करिए, उंगलियों को खोलिए और श्वास छोड़िए, नीचे करिए, मुट्ठी बनाएं। Important thing in this is to fill the lungs and empty the lungs with every inhalation and exhalation. Now, Bhastrika Pranayam, you can do 3 rounds. Each round you can do 15 counts. I will demonstrate 1 round for you. Alright, let's get ready. Loose fist next to your shoulders. Take a normal deep breath in and breathe out with a smile. साधारण श्वास अंदर और बाहर. For Bhastrika, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Continue. And relax. Vishram, palms on your knees, open to the sky. The gentle smile on your face. Feel the energy rush in the body. विश्राम करिए और शरीर में जो भी संवेदना है उसको महसूस करिए मुस्कान के साथ. And slowly and gently you may open your eyes. Bhastrika Pranayam is an instant energizer, so you can do this anytime you are feeling low of energy, and you can do this 3 rounds. Now the third breath work is Kapalbhati. Now Kapalbhati is not identified as a pranayam in the scriptures, but it involves breathing. Now the same precautions which I mentioned for the Bhastrika Pranayam, and one more thing is any abdominal issues like hernia or surgery, then also you may avoid it or do it very gently. Now Kapala means skull, Bhati means shining. So when you do Kapalbhati, it stimulates your intellect. Another benefit is it also increases the body metabolic rate. So if you do this before any exercise, it will help you to give more result, better result. Alright. Now you keep your attention on the navel and you forcefully exhale through the nose, and at the same time you pull the navel in. And you relax, the body will breathe in by itself. हमको तेजी से सांस को बाहर फेंकना है, उसी वक्त नाभि को अंदर खींचना है और विश्राम करना है, श्वास अपने आप अंदर चले जाएगा. And this also we do 3 rounds with each round around 15 to 20 counts. Alright, so I will demonstrate 1 round for all of you. You can do along with me and you can continue for 2 more rounds also. Smile on your face, attention on the navel. Whenever we do pranayama or breath work, we keep our spine erect. जब भी हम प्राणायाम करते हैं, अपना रीढ़ की हड्डी सीधा रहना चाहिए. ध्यान नाभि पर, attention on the navel, normal breath in and breathe out. For Kapalbhati, breathe in, forcefully exhale through the nose, pull the navel in. श्वास अंदर करिए, तेजी से श्वास को बाहर फेंकिए, नाभि को अंदर खींचिए. In, out, in, out, in, out. Continue. And relax, Vishram. Feel the sensations in the body and the head region.
And slowly and gently you may open your eyes. Is that clear? Alright. So now the first three were energizing breaths. अभी ने हम 3 प्राणायाम या ब्रेथ वर्क किया है, वो एनर्जाइजिंग प्राणायाम था. अभी हम विश्राम रिलैक्सेशन प्राणायाम करेंगे. विल बी डूइंग रिलैक्सेशन प्राणायाम. विल डू 2 रिलैक्सेशन प्राणायाम. द फर्स्ट इज द भ्रामरी. भ्रामरी करेंगे. टेक योर इंडेक्स फिंगर and put it on the ear flap. There's like a small lid kind of flap here. You put it on that. छोटा सा ढक्कन जैसा कान के ऊपर एक छोटा मसल है, उसके ऊपर अपना तर्जनी को रखिए. Now what we will do, we will inhale, like expand the whole body and breathe in. And as you breathe out, we make the sound. श्वास छोड़ते छोड़ते भ्रमर आवाज करिए और उंगलियों से हल्का सा ढक्कन को अंदर बाहर दबाएं. With your finger, gently press the ear flap in and out. Alright, shall we do that? Elbows up, eyes closed, breathe in and breathe out. सांस छोड़िए. Breathe in. Breathe in. Relax your hands, palms on your knees, open to the sky. Feel a sense of calmness in your mind and your body. And slowly and gently you may open your eyes. Now this is Bhramari Pranayam. It helps to soothe or relax your nervous system. Alright. Now for the last pranayam, we will learn the Nadi Shodhan or alternate nostril breathing. Now keep chin mudra with your left hand. अभी Nadi Shodhan pranayam करेंगे. Chin mudra रखिए बाएं हाथ में. Tip of your thumb and the index finger gently touching. अपना अंगुष्ठ और तर्जनी को साथ साथ रखिए. Keep it on the left knee. Now right hand goes on the right nostril. Index finger and the middle finger अपना तर्जनी मध्यमा दोनों भ्रुवों के बीच में. In between your eyebrows, gently touching. Now right thumb on the right nostril. Angushta दाएं नाक के ऊपर. Anamika and Kanishtika. Your ring finger and the little finger on the left nostril. Now you will use the thumb and the ring finger to open and close the nostrils. Now what we do, we inhale from the left nostril, exhale from the right. We inhale back from the right and exhale from the left. This is one round. अभी हम बाएं से श्वास अंदर करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, वापस दाएं से अंदर लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे. ये एक राउंड है. Now how the breath should be? The breath should be very gentle and slow. अभी हम इसको 5 राउंड करेंगे. We'll be doing 5 rounds, but when you're practicing, you can go till around 9 to 11 rounds. जब आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे 9 राउंड तक जा सकते हैं आप. 11 भी कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. Let's begin. Smile on your face. Get ready. This is called as the Nasagra Mudra. Now first breathe in through both the nostrils. दोनों नाक से श्वास अंदर और धीरे धीरे बाएं से छोड़िए. Slowly and gently exhale through the left. Now breathe in through the left nostril. बाएं से श्वास अंदर धीरे धीरे, very slowly. Exhale through the right. दाएं से श्वास छोड़िए. Inhale back from the right. दाएं से श्वास वापस अंदर. Exhale to the left. बाएं से बाहर.
इनहेल बैक थ्रू द लेफ्ट, बाएं से अंदर, दाएं से बाहर, एक्सेल टू द राइट। इनहेल फ्रॉम द राइट, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, एक्सेल टू द लेफ्ट। Now continue on your own for 3 more rounds. अपने आप 3 और राउंड्स करिए। Your full attention on the breath. पूरा ध्यान श्वास पर। As you exhale through the left nostril, you may relax. बाएं नाक से श्वास छोड़ते छोड़ते विश्राम करिए। And slowly and gently, you may open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोलिए। How are you feeling? कैसे लग रहा है? नाड़ी शोधन प्राणायामा हेल्प्स यू टू बैलेंस द एनर्जी चैनल्स इन द बॉडी। शरीर में नाड़ियाँ हैं, उसको बैलेंस करने में, उसमें संतुलन लेके आने में मदद करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट, नाउ ऑल दीज प्राणायामास यू कैन प्रैक्टिस एवरी डे। ये सारा प्राणायाम आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ द प्रैक्टिस वॉज टुडे। कमेंट सेक्शन में बताएं आज का प्रैक्टिस कैसे लगा। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस channel. And I also teach daily Shish Yoga every day online on YouTube. You can join there with the link given below in the description. And if you'd like to continue with the meditation, you can do so with Gurudev Shri Shri Ravi Shankar Ji. For that also I have given the link below in the description. Namaste. Jai Gurudev.